Namaskar, good evening and welcome. Welcome to Divine Healing Valley Spirituality and Healing Meet. I'm Shashi Dhar, your host, and we are here with our regular Wednesday meet. And the topic for today is the three gunas. And this is in connection with the last week topic when we talked of duality, the cause of suffering. So we did that. Duality, the cause of suffering was the topic for the last week. So this is not in continuation, I would say, but in connection with that topic, we will be going to discuss on the three gunas. Yes. So when we talk of the three gunas, obviously, we are talking of the whole world, the whole universe. ये पूरा जगत जो हम जिसको जानते हैं, ये तीन गुनास से ही बना हुआ है. So the three gunas of tamas, rajas, and sattva. These are the three qualities. And the whole universe is consists of these three gunas. Nothing is beyond these three gunas. Let me put it that way. तो हम जो कुछ भी एक्सपीरियंस करते हैं, जो कुछ भी देखते हैं, वो सब इन्हीं तीन गुनास के कॉम्बिनेशन से हो रहा है. Yes, and our body is also made up of the five bhut. We call that panchbhut. That is right. But the mind, the quality of mind is always the same. The three gunas. So when we talk of, in the last session we talked of duality. Duality is the cause of suffering. Duality हमारे सारे experiences इस पृथ्वी लोक पे, इस जगत में सब duality पे based है. Because we have to experience something, it has to be in the form of duality. अगर सुख चाहिए तो दुख साथ में आएगा. So whatever we experience in life is in the form of duality. ऊपर नीचे, right, left, top, bottom, dukh, sukh, pain, pleasure. So we know that, right? All the experiences are. And how are we living our life? हम इस जगत में जी कैसे रहे हैं? We are attracted towards the pleasure and we run away from the pain. यानी कि we resist or we don't avoid pain and we rush towards the pleasure. तो pleasure and pain के इस भाग दौड़ में हमारी पूरी जिंदगी जा रही है. So that is how we experience duality in our life. And that is also the cause of suffering. क्योंकि अगर हम बोले एक चाहिए और दूसरा नहीं चाहिए, तो वो हमारे हाथ में नहीं होता है. तो जब मन चाहा होता है, we feel great. और जब अनचाहा होता है, we feel lost. So that is how we experience duality, and that is the cause of suffering. But in all our experiences, we will find these three qualities are always there. चाहे वो हमारे कर्म में हो, हमारे thoughts, हमारे words, हमारे deeds, they are all colored with these three gunas. So let us look into the depth of these three gunas and see how these are present in our life, or how these are, you can say, impacting our life. और हमारी लाइफ में किस चीज की प्रधानता है, ये हम आज ऑब्जर्व करेंगे. और हमारी जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी किस हिसाब से जाती है, इसके ऊपर हम ध्यान से फोकस करेंगे. So that is the discussion for today. Yes. So having said the you can say benchmark or the foundation, now the discussion is open for anybody who wants to share. So the three gunas we all know: the tamas, the tamogun, the rajas, the rajogun, and the sattva, the satogun. Yes. So who would like to share? Who would like to share your experience, your understanding of these three gunas and how this is appearing or was appearing in your life? And we can also look at the, अगर किसी को clarity नहीं है, then we will go into the depth of it very soon. So you just have to wait for the discussions to happen. Yes. Meanwhile, Vivek Waliaji, welcome. Yes. And anybody who wants to share, or even otherwise, if you're comfortable, you should switch on the video so that we can connect with each other better. Yes. कौन बोलना चाहेंगे? Okay. All right. So we dive straight away into the definition or into the details of these three gunas. Will that be fine? Anybody who has any doubt
पहले तो ये पूछ लेना, किसको कोई डाउट हो कि ये 3 गुनास क्या हैं? है कोई ऐसा जिसको आइडिया नहीं हो कि ये तमस क्या है, रजस क्या है? हाँ सर, मेरे को है ये, शशि सर, ओके, हम ऑन दिस साइड। यस अमन। तो क्या हाँ, क्वेश्चन है तो आपका? क्वेश्चन यही था कि रजत रजत होता है या रजक होता है सर? रजस, रजस है, रस है ना, तो रजस है ये, ओके, राजसिक। राजसिक, ओके, रजस। सो रजस, रजस और तमस अ, और तमस, सत्व। इन दोनों में क्या डिफरेंस है? हाँ, so we'll coming to that, right? So be attentive and just be participative. You'll know. So let us start with basically the consciousness का जो लेवल होता है। एक इंसान जो है, उसकी कॉन्शियसनेस किस लेवल से उठ सकती है और कहाँ से उठ सकती है और किस लेवल तक जा सकती है। लेट अस लुक इनटू दैट। तो एक इंसान की जो कॉन्शियसनेस है, वी से द फर्स्ट लेवल इज द पशुता। तो एक इंसान है जो पशुता के लेवल पे जी सकता है, कॉन्शियसनेस उसकी हार्ड वायर्ड है towards Pashuta. What does that mean? Animalistic instincts. How do an animal live their life? उनके बेसिक सर्वाइवल में क्या होगा? खाना पीना है, सोना है, प्रोक्रिएशन एंड सर्वाइव, दैट्स इट। नो अवेकनिंग, नो टॉक ऑफ राइजिंग ऑफ कॉन्शियसनेस। तो पशुता सबसे लोवेस्ट लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस मानी गई है इंसानों के लिए, जहां पे कोई अवेकनिंग की बात नहीं हो रही है। यू आर ओनली डूइंग व्हाट an animal would do in life, which means basic survival instincts. ये पशुता है, ये कॉन्शियसनेस पशुता है, राइट? एंड अज्ञान में है, इग्नोरेंस में है, मूर्ता में है, दैट मीन्स लेजी, स्लीप वॉकिंग इन लाइफ, इग्नोरेंस में। So this is basically called the quality of tamas. Tamas is darkness, ignorance, inertia. मूर्ता बोलते हैं, मूर्छित होता है। इसमें क्या होता है? देयर इज एब्सोल्युटली नो लाइफ, एब्सोल्युटली एनर्जी लेवल लो है। जैसे लोग सैड हैं, डिप्रेशन में हैं, लाइफ में कोई इंटरेस्ट नहीं, कोई एंथुसियाज्म नहीं, एब्सोल्युटली डेड इन लाइफ। Get that point? Somebody keep some movement on, otherwise I will think the full frame is frozen. Yeah, keep nodding or something, so I know at least people who are having their videos on, so that will tell me that my net is working. Yes, so that is tamas, right? tamas का आइडिया लगा थोड़ा सा। इग्नोरेंस में है, मूर्ता में है, बिल्कुल सर्वाइवल इशू में है, and somebody who is sad and depressed. And if you have seen my post, if you just see that post, उसमें क्लियर होगा तमस में कैसे दिखाया उस आदमी को, कैसे बैठा हुआ, मरा हुआ बैठा हुआ, ऐसे डूबा हुआ, मरा हुआ, पिटा हुआ, दुनिया की बोझ से मारा बेचारा। उसको हमदर्द का सिनकारा भी नहीं मिला, जो पहले ऐड आता था, वो भी नहीं मिला, तो मरा पड़ा है बिल्कुल। तो दैट इज द क्वालिटी ऑफ तमस, राइट? पशुता बोलते हैं इसे। इसके ऊपर का जो लेवल है दैट इज, तो इसमें क्या है? बिल्कुल हाई लो एनर्जी है ना। दूसरा होता है एब्सोल्युटली हाइपर, ये हाइपो है, दैट मीन्स बिलो द एनर्जी लेवल। दूसरा है बिल्कुल हाइपर, एब्सोल्युटली इन एक्शन। अब वो नीडलेस एक्शन है, ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, टोटल एंग्जाइटी में भाग रहा है। क्यों भाग रहा है पता नहीं, कहाँ भागना है पता नहीं, पर भागना है। फुल ऑफ एक्शन, पैशन, डिजायर्स, रजस, ये राजसिक है, टोटल हाइपर एक्टिव। अब ये खराब नहीं होता है वैसे, बट जस्ट टू टेल यू इट इज हाइपर। हाइपर एक्टिव लोगों को देखा है आपने, दे आर ऑलवेज इन एक्शन मोड। एक्साइटमेंट भी होती है, एंग्जाइटी भी होती है, एंड व्हाट डू यू से, एम्बिशियस, कुछ भी करेंगे, रिजल्ट्स चाहिए। होता है ना, रिजल्ट ओरिएंटेड, गो गेटर्स इन लाइफ। सो दे आर द वंस हु आर इन द राजसिक। ये राजसिक क्वालिटी है। तो राजसिक क्वालिटी में क्या आएगा? somebody who is full of अटैचमेंट भी यहीं पे आएगा, डिजायर्स भी यहीं पे आ रहे हैं, तो अपनी कामनाओं की पूर्ति के लिए कुछ भी करेगा। बाय हुक और बाय क्रुक ही विल गेट द रिजल्ट। तो ये सब ये राजसिक है, राइट?
और तीसरा क्या है, इससे ऊपर का लेवल, इससे ऊपर का लेवल है वो है सत्व, सात्विक, वेयर वी टॉक ऑफ एब्सोल्युटली काम, पीसफुल, यानी कि एनर्जी इज इन मॉडरेशन, इज इन एब्सोल्यूट परफेक्ट बैलेंस, ना हाइपर है ना हाइपो है, मतलब ना बिलो द लेवल एनर्जी है ना अबव द लेवल एनर्जी है, जितनी चाहिए उतनी एनर्जी है, जब काम करना है पूरी एनर्जी के साथ, और उसके बाद रिलैक्स, calm, peaceful. So whatever you can think of, you can see a person in a meditative trance, so that would be the ideal sattvic quality, sattva. Yes, so this is the basic differentiation you can see as a visual, what you can see in the three qualities. तो तमस यानी कि तामसिक, तमोगुण, रजस रजोगुण, एंड सत्वा सतोगुण, राइट। अब जैसे हमने बताया, पहला पशुता है, तो दूसरा देवता। देवता इज पशुता इज पर्सनली, बेसिकली यू कैन से पर्सन हु इज फुल ऑफ ईगो, एंड ईगो के सेंटर में है, एंड ही ओनली कंज्यूम, सो इज ए कंज्यूमर, मेरे को चाहिए, मुझे चाहिए, मुझे चाहिए, आई मी माइन, मुझे चाहिए, एक्यूमुलेशन एंड ऑल दैट इज बेसिकली द ईगोसेंट्रिक। जब हम बात करते हैं देवता की, ही इज अ प्रोवाइडर, नॉट दैट ही इज द ग्रेटेस्ट, इवोल्यूशन में सबसे हाई नहीं है, लेकिन वो प्रोवाइडर है। सो ऑल द बिजनेसमैन यू कैन थिंक ऑफ, दोज हु आर प्रोवाइडिंग, जैसे इंद्रदेव हैं, जैसे बोलते हैं गॉड ऑफ थंडर इज प्रोवाइडिंग। तो जितने हमारे डेमी गॉड्स हैं, मेटीरियलिस्टिक गॉड्स हैं, दे विल ऑल बी प्रोवाइडिंग। आप उनकी आराधना करो तो वो आपको वरदान देंगे, क्यों? उनको देना आता है, दैट इज व्हाट दे गिव, दे आर प्रोवाइडर्स। सो इंस्टेड ऑफ कंज्यूमर्स, नाउ यू बिकम प्रोवाइडर्स। तो देवता जो देते हैं, जो दे रहे हैं, देवता, दैट इज द सेकेंड कैटेगरी ऑफ ह्यूमन कॉन्शियसनेस। तो पशुता से उठ के आए देवता में, और इसके ऊपर, और इसमें भी कैटेगरीज हैं थोड़े से, जो नेगेटिव इमोशंस वाले होते हैं वो वापस तमस में चले जाते हैं, जो पॉजिटिव इमोशंस के साथ होंगे वो हायर लेवल पे जाएंगे, विच विल टेक यू टू द सात्विक लेवल, द सत्वा, राइट। एंड सत्वा इज बेसिकली कॉल्ड द थर्ड लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस, विच इज दिव्यता। तो तीन कैटेगरी कौन से हुए? पशुता, देवता, एंड थर्ड एंड द हाईएस्ट लेवल इज दिव्यता। तो हम सब एक लेवल पे मान सकते हैं तामसिक, यानी कि पशुता से ऊपर उठ के रजस का भी हमने काफ़ी एक्सपीरियंस ले लिया है, दोस हू आर इन द मिडिल एज, तो रजस भी हो चुका है काफ़ी कुछ। तो अब हम सत्वा की तरफ बढ़ रहे हैं। तो दिव्यता की तरफ बढ़ते समय दो कैटेगरी के लोग होते हैं, एक होते हैं साधक, जो स्पिरिचुअल सीकर्स हैं, एंड ये साधना चलती रहती है, और जब साधना परिपक्व हो जाती है, हम बोलते हैं ये हो गए सिद्ध। तो सिद्ध या बुद्ध, जैसा भी मान लो आप, दैट इज द लेवल ऑफ कॉन्शियसनेस वी आर टॉकिंग ऑफ, राइट। तो ह्यूमन कॉन्शियसनेस का लेवल क्लियर है, और ये तीन गुणों का कैटेगरी अगर क्लियर है, देन यू कैन ईजिली सी व्हाट इज हैपनिंग इन योर लाइफ राइट नाउ, और वी कैन ईजिली डू स्वाध्याय एंड सी हमारे लाइफ में अभी किसकी प्रधानता है। नाउ अ क्वेश्चन फ्रॉम माय साइड, एंड देन वी गो इनटू द डिस्कशन। लास्ट सेशन वी टॉक्ड ऑफ सफरिंग, एंड बेस्ड ऑन डुअलिटी, कॉज इज डुअलिटी, राइट। तो तमस में और रजस में सफरिंग की उम्मीद ज़्यादा है, यानी कि सफरिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है, या सत्वा में सफरिंग की पॉसिबिलिटी ज़्यादा है? क्या लगता है आपको, सफरिंग कहाँ पे होगी? तामसिक, तमस में और रजस में, है ना? क्योंकि रजस में भी अगर आप फुल एक्शन में हैं, तमस में तो है ही सफरिंग, वो तो हमने डेफिनेशन से ही देख लिया कि पर्सन इज इग्नोरेंट, पर्सन इज स्लीप वॉकिंग इन लाइफ, तो कोई अवेयरनेस ही नहीं है, कोई कॉन्शियसनेस ही लेवल नहीं है, तो ऑब्वियसली दैट इज सफरिंग। यस, रजस में भी क्या होगा, आइदर यू आर फुलफिलिंग योर डिजायर्स। तो डिजायर्स की फुलफिलमेंट में क्या होता है, इफ यू डोंट गेट द डिजायर्ड, अगर डिजायर्स फुलफिल नहीं हुई तो फ्रस्ट्रेशन होगी, और डिजायर्स पूरी हो भी गई तो भी डिसैटिस्फैक्शन ही होगी, क्योंकि नेक्स्ट लेवल ऑफ डिजायर तुरंत खड़ी हो जाती है ना? अगर आपका एक क्वार्टरली टारगेट पूरा हो गया, अगर आप जॉब में हैं या बिजनेस में हैं, तो क्या होगा, ताली बजी, बहुत अच्छा लगा, लेकिन अगले क्वार्टर की टेंशन शुरू हो गई, तो नेक्स्ट डिजायर
तुरंत खड़ी हो जाती है जैसे ही एक लेवल अचीव होता है। तो राजसिक में भी आपको सफरिंग ही मिलेगी, एंजाइटी ही होगी। तो फियर्स एंड होप्स के चक्कर में आप लगे रहोगे। फियर ऑफ द पास्ट फेलियर एंड फ्यूचर में होप एंड फियर्स के साथ आप एंजाइटी के साथ आगे जाओगे। तो तमस और रजस में सफरिंग ही है। सफरिंग से फ्रीडम कहाँ मिलेगी? जब आप एक स्पिरिचुअल सीकिंग करके सत्वा की तरफ बढ़ोगे, यानी कि दिव्यता की तरफ बढ़ोगे। तो एक साधक उस पाथ पे चलता है जहां पे उसे पीस एंड फुलफिलमेंट मिलती है। How many of you are agreeing with me? Aligned? Right, great. So now let us have some sharing, because now I want you to look into your life and share where do you think you are in consciousness and in the quality of the gunas in your life. Yes? Right. So let's have some people share. And meanwhile, कौन आए हैं अभी? Veena ji, welcome. Archana ji, welcome. Oh, Archana ji, share. Welcome. Yes. So please switch on your videos and share. Or even otherwise you can share. No? So what is your understanding? Anything that you want to share? Anything you want to ask? Please go ahead. Yes. Third. Yes. हाँ जी। Veena, कौन बोल रहे? मैं अमित। हाँ अमित, हाँ बोलिए। So good, very good. I think but there is initially in the first 3-4 minutes जो हमने बात करी about the energy level, the difference of the energy level of the 3 levels. यहाँ पे मेरे को एक understanding में थोड़ा सा, maybe I need some guidance here now. So if this is the definition. Yeah. Go ahead. Hello, am I frozen? I think Amit is frozen. Okay, that's fine. Not fine, like he will come back. That's okay. That Yes. a spiritually awakened person. Amit ji, we lost you in between, so you have to say that again, huh? Okay. So is it not that a spiritually awakened person who is living a very sattvic lifestyle and also in the thoughts, but is also living in a very high energy zone to that extent that perhaps it could be a hyper? But when I say hyper, it is towards the direction of, let's say, establishing more dharma, developing more consciousness and helping people to evolve and taking a lot of great actions, and also living absolutely sattvically, for example, sattvic thoughts and the consumption of any substance. So, I mean, there are some gurus which are coming in my mind right now who are hyper, very active, sattvic, and progressing consciously and doing the wisdom, like not just doing, but spreading as much as they can. So then will they not be called as sattvic because they are apparently high on energy, apparently at least? Okay, so there is a little, I will say there is a gap in understanding. जो सत्वा में हैं, they can create high, you can say high volatile projects where we can have a mass transformation or, awakening in people. But they themselves are in a very calm and peaceful space. अंदर से बिल्कुल रॉक सॉलिड है, वो स्थित प्रज्ञ है। करेक्ट। बाहर की दुनिया में बहुत कुछ कर सकते हैं वो, लेकिन अंदर से बिल्कुल काम एंड पीसफुल है। राजसिक पर्सन इज इन कंप्लीट टर्मोइल फ्रॉम इनसाइड। हाँ, सो टर्मोइल आई अंडरस्टैंड। ओके, मे बी टर्मोइल नो, वो वेस्टफुल एनर्जी होती है। उसका जो एनर्जी लेवल होता है, जो रेस्टलेसनेस है, जो एंजाइटी है, दैट इज मोर इन ए वेस्टफुल मैनर। ओवर थिंकिंग, ओवर एनालाइजिंग, नेगेटिव थिंकिंग, उसमें पूरी एनर्जी निकल जाती है। भाग दौड़ कर रहा है लेकिन रिजल्ट की ओरिएंटेड नहीं है, कहीं भी कुछ भी कर रहा है। गेट दैट? तो राजसिक में देयर इज अ वेस्ट ऑफ एनर्जी। सात्विक में देयर इज नो वेस्ट ऑफ एनर्जी। ही इज वेरी कंसंट्रेटेड, वेरी फोकस्ड, विथ मिनिमम एफर्ट ही कैन क्रिएट मैक्सिमम रिजल्ट्स। अंदर से पीसफुल है। तो वहां पे वो रेस्टलेस नहीं है, हाइपर नहीं है, एब्सोल्युटली रॉक सॉलिड है। दैट इज अ डिफरेंस। Correct. All these things Rest of the things is absolutely fine what you said. Completely agree with you. Sattvic person can create magical results in his personal life as well as in the life in the world. So all the self-actualized leaders would create massive results in the outside world. But left to themselves, they are absolutely rock solid. Yes? If I look at in terms of the currency of energy, I need to change maybe after this session that I think
that the energy would be higher in a spiritually, or they would be vibrating highly in terms of energy if they are in sattva, and rajasic people would be at a lower level. But what you said perhaps is rajasic is absolute, no, rajasic is higher, No, and sattvic is mid level. So I think I no, need no, to don't look at it that way. वेस्टफुल एनर्जी राजसिक में ज्यादा है, सात्विक में वेस्टफुल एनर्जी बिल्कुल नहीं है. exactly, and that's why exactly they will have lesser energy. They will Because be there is a peaceful. waste. See, Because there is a waste. in बाहर Rajasic. की दुनिया में एक्शन कर रहे हैं, शायद दोनों एक जैसे ही एक्शन करेंगे. Now there are many kings like Duryodhan, just to give you an example, and there is a king like Janaka. Now Janaka is enlightened, है ना, वो पूरे सत्वा में established हैं, वो भी राज्य चला रहे हैं और बहुत शांति से चला रहे हैं और बहुत बढ़िया रिफॉर्म्स ला रहे हैं अपनी कंट्री में. ग्रेट रिजल्ट्स, मैजिकल रिजल्ट्स ही इज प्रोड्यूसिंग, बट अंदर से बिल्कुल रॉक सॉलिड है ना, वो शांत है. Correct. दुर्योधन इज क्रिएटिंग डिजास्टर्स आफ्टर डिजास्टर्स एंड ही इज एब्सोल्युटली रेस्टलेस. तो वो राजसिक है, समझ रहे हो, या तामसिक लेवल पे जा रहा है. Absolutely. दैट इज अ डिफरेंस यू कैन अंडरस्टैंड. Yeah. दैट्स ऑल. Sure. बाकी परफेक्ट है. Okay, perfect. I think, yeah, so those things I knew, but then I need to rethink from the energies distribution level. Don't get stuck with that part. Only thing is waste नहीं होगा energy. उनका constructive होगा, इनका destructive होगा. Look at it that way. Of course, yeah. Sir, Okay. even tamogun can be utilized by the sattvic people. If you look at the devas, if you look at the Sikhs, okay, we are considered as saint soldiers. तो जब वेपन चलाना है तो वेपन भी चलाया है और मर्डर भी हुआ है. ठीक है. तो खून जब निकलता है, इट्स नॉट सतो, इट्स टोटली तमो. No, it is rajas. Do you think so, sir? Action है. Do you think it's not tamo? It's not tamo. Action oriented है ना. But still, धर्म की स्थापना के लिए अगर आप धर्म युद्ध कर रहे हो तो वो एक राजसिक एक्शन है, तामसिक नहीं है. वो नहीं, फिर मर्डर इज स्टिल कंसिडर नॉट अ गुड थिंग. इंटेंशन ऑफ द मर्डर इज कंसिडर. कोई पेट्रियट है बॉर्डर पे, बट द जो फिजिकल रियलिटी मैनिफेस्ट हो रहा है वो तो तमो ही है ना. See, gunas are always the background of the activity. Don't look at the activity. ठीक है. तमोगुण में क्या होगा? Somebody committing suicide, sad, depressed, committing suicide, or throwing an acid on somebody. What about crimes? What about hold on. criminals? First get the difference. ठीक है. तो सुसाइड कर रहा है या फिर वो किसी का मर्डर कर रहा है बेस्ड ऑन सेल्फिशनेस, बेस्ड ऑन अटैचमेंट, बेस्ड ऑन डिप्रेशन, समझ गए, वो तमोगुण में जाएगा. धर्म की स्थापना के लिए कोई युद्ध कर रहा है, धर्म युद्ध कर रहा है, उसमें जो एक्शन हो रहा है, उसमें जो मर्डर हो रहा है, वो जैसे बॉर्डर पे कोई सोल्जर लड़ रहा है, वो राजसिक है. राइट. एंड इवन देन इफ ही कंसिडर्स दैट, लाइक इन महाभारत, व्हेन अर्जुन इज surrendering himself to the divine and then taking the action, it could even be a sattvic activity of a war where he can get a Paramveer Chakra. Get my point? So you have to understand the motive behind it, not the action of killing someone. It is the motive behind it which is important. But Krishna has managed to kill Raja Kans, and there was one more guy they have killed individually, and it was not a situation of a war. What would you consider that? धर्म का युद्ध है. Let's not get into further discussions on this. Let's have more people to share. ठीक है. Understanding को पकड़ो पहले, action को नहीं पकड़ो. Intention behind the action is very, very important. Same action can come in tamasic, same can come in rajasic, same can come in sattvic. Intention behind it will be different. Okay. ठीक है. Okay. A mother protecting her child and killing a bhediya or killing a lion. What will you call that? It's an act of bravery, right? तो उसमें आप तमस नहीं बोलोगे उसे. It's coming out of love for the child. So there are a lot of situations where you have to understand the intention behind that action before the actual action. Okay. So, okay, fine. Yeah. So just be with it. Think about it. But look into your life. That will be more pertinent. Otherwise, it will be a discussion which can go on endlessly. Okay. Let us look into our life. मेरी life में तमस कहाँ है, रजस कहाँ है, सत्वा कहाँ है, मेरे actions क्या हैं. In fact, everything, मेरे thoughts, मेरे words, मेरे actions, मैं दान कर रहा हूँ, वो भी इन तीनों गुणों में आता है.
Everything in this universe is governed by these three gunas. There is Mhm. no action that you can take which is beyond these three gunas. So let us look into our life and see whether we are moving in the right direction towards the raising of consciousness. That is the discussion we should be involved in. Yeah. All right, let's acknowledge Amit ji and let's acknowledge Gurkirat ji. Yes. Anybody else wants to share? Rishi, I would like to just Sure. share from Gurkirat's point of view, Hmm. because this was a lovely discussion, but it should not confuse anybody. I'll share my point of view. Hmm. As Shashi has said, these are known as gunas, and guna is always related to the intention. मोटिव क्या है? So इसलिए एक्शन से ज्यादा मोटिव पे फोकस करते हैं. That's why everybody should understand. That's what Shashi is sharing. I understand that same action can be in any of the category depending on to the intention. वो है सबसे बड़ी बात. Yes. Perfect. That's right. Perfect. Thank you. Well said. Yeah. Let's acknowledge Sanjeev. Very crisp and clear understanding. Yes. Anybody else who wants to share? Look into your life. Look into your life. If there is, now I'm going to make a bold statement, huh? If there is any kind of suffering and misery in your life, look for these tamasic and rajasic gunas in your life. इसको इसको मिनिमाइज करना है, और मिनिमाइज करके जो टाइम बचेगा या आपको स्पेसिफिकली अलॉटेड टाइम में आपके सात्विक साधना को बढ़ाना है. दैट इज ओनली वे टू मूव फॉरवर्ड इन द और मूव अपवर्ड इन द स्पिरिचुअल जर्नी. See, our senses will always take us up outward, yes, into the world, and it will also, since the world is full of, you can say, situations ऐसी हैं हमारी कि वहां पे कोई सात्विक तो ज्यादा होगा नहीं. सात्विक तो हमारी साधना से ही होता है. तो ज्यादातर वर्ल्ड में कौन से एक्शंस हो रहे हैं? राजसिक हो रहे हैं या तामसिक हो रहे हैं. तो इट विल लोअर डाउन आवर कॉन्शियसनेस. हमारी चेतना का स्तर जो है बड़ी जल्दी गिर जाएगा अगर हम जगत की तरफ जाएंगे. So you have to understand this. Our senses take us into the outside world, which will result in the lowering of the level of our consciousness. That means it will go down to the solar chakra, to the sacral chakra, to the root chakra, if I'm talking in the level of chakras. So we have to specify, or rather focus on our sadhana when we are moving from the lower chakras to the higher chakras. So Mooladhar से, स्वादिष्ठान से, मणिपुरा से, अनाहट चक्रा में आएंगे, हार्ट चक्रा, देन थ्रोट चक्रा, विशुद्धि चक्रा, एंड देन थर्ड आई चक्रा, which is the आज्ञा चक्रा. That is the rise of consciousness, and that will happen when our sadhana is such that we are moving away from tamas and rajas and getting centered in sattva. That should be the journey. So that is what I am focusing on. That is what I am really interested in knowing कि हमारी लाइफ में किस चीज की प्रधानता है. So who wants to share? And you can also compare your life maybe 10 years before and now. 10 साल पहले कौन से गुण ज्यादा थे और अभी 10 साल के स्पिरिचुअल जर्नी में आपकी जर्नी आपको कहाँ लेके आई है. So you can share even that. That will open up a lot of things for people. Yes. I'll share something on this, Shashi sir. Raman this side. So Yes, Saman, go ahead, and after that, Tarun. this Yeah. this reminds me. So before COVID, I was totally into the non-veg and good alcohol, and also buying the things just for my own desires, and seeking the happiness in the worldly things and items. Yes. After this, realized that there is something else, which gives us more happiness and all that. Maybe it was just for 15 days lockdown or the isolation during the COVID. And all of a sudden, realization was that, there is something else. So what is that? Something else was, your own self-actualization, your own aura. Okay, if it is good, it is neat and clean, or I don't know what had happened, but maybe it was a realization, and then there was a change. So left a lot of tamasic things, and then moved on to maybe the rajasic things. I'll not say that I'm sattvic, but yes, because when you are in the worldly affairs, so you kind of also do a lot of selfish things. Okay, and you are supposed to. In job, for example, you are on IC role, so you cannot be sattvic all the time. Okay. But yes, I mean, this
I think so. The point here is that is this a process that you have to pass through the tamasic first, then the rajasic, and then to sattvic with the progress of the age, or is it like an inherent nature of a person that he's or she's totally inclined to either tamasic or rajasic or sattvic? Okay, very good question. So let's acknowledge Aman. Good introspection. So first of all, let me acknowledge you on your progress of your spiritual journey. जो आपने कहा कि लॉकडाउन के टाइम पे आपने काफी तामसिक चीजें छोड़ी, and you, if not sattvic, at least you came into the level of rajasic. So that's a good progress. Huh? And obviously, what you said is absolutely right. When you're interacting with the world, there will be a lot of interactions in the rajasic zone. So that is absolutely perfect. क्योंकि ईगो का सेंटर है वो, एंड सक्सेस चाहिए, आपको बिजनेस डील्स क्लोज करनी है, प्रॉफिट्स चाहिए, ऑल दीज थिंग्स आर देयर. सो ऑब्वियसली यू विल बी इन द राजसिक मोड. एब्सोल्युटली फाइन. Yes. So now the question is, when do you practice sattvic? Obviously not when you are talking to your boss, or when you are having an argument with your wife, or when you are having an intense discussion or a heated discussion with your neighbors, है ना? तब तो नहीं होगा. या ड्राइव कर रहे हो और किसी से प्यारी प्यारी बातें हो रही हैं सड़क पे, तो वो वहाँ पे तो आपका सात्विक का कोई सीन ही नहीं है ना. तो सात्विक क्वालिटी आप कहाँ नर्चर करोगे? नंबर 1. And that is what you need to understand. And from my experience, I can tell you that when I was stuck in the tamasic and rajasic world, what I was told by my coach, because I attended many programs, so there was a coach who was guiding me. So he said, सात्विक टाइम ब्रह्म मुहूर्त में क्यों नहीं शुरू करते सुबह सुबह? That is the best time. You are not in the world now, but the energy level is absolutely pure in the morning. तो ब्रह्म मुहूर्त में उठो और अपनी साधना शुरू करो. So that is what I started. So all my sattvic activities when I was in the corporate world started when right in the morning. So I won't say you get up at 3:30 and all, but yes, even if you start at 4:35, 5:30, 6, whatever time you can, before 6, that 1 hour or 2 hours is your me time when you can focus on the sattvic zone. When you are in the sattvic zone, you can do your yoga, meditation, pranayam, bhakti, whatever you want to do. Maybe simply walking, chanting some mantra, like that. And so you are tuning your mind into positive. Yes, or simply chanting some affirmations, even that is perfectly fine. So सात्विक टाइम हमको निकालना पड़ता है, क्योंकि कोई हमको सात्विक टाइम देगा नहीं. That is the first point that we need to understand, right? And then there is no specific age where you will say कि okay, इस एज में मैं तामसिक हूँ, इस एज में मैं राजसिक हो जाऊंगा और इसमें मैं बाद में सात्विक हो जाऊंगा. No, it's nothing like that. So it depends on your, you can say, your संस्कार जो हैं आपके, जो आपके चित्त में हैं. तो हमारे चित्त में सारे ही संस्कार हैं. जैसे जैसे इवोल्यूशन होता है वैसे वैसे तामसिक डोरमेंट हो जाएगा. पहले तामसिक में अगर आप थे, तामसिक से राजसिक में जाओगे तो तामसिक डोरमेंट हो जाएंगे, और राजसिक से सात्विक की तरफ जाओगे तो राजसिक थोड़े डोरमेंट हो जाएंगे. यू गेट माय पॉइंट? एंड इट्स जस्ट लाइक योर प्लेलिस्ट. आपके पास अगर 100 गानों का प्लेलिस्ट है, आप 10 गाने सुनते हैं ज़्यादा, तो वो 10 टॉप में आ जाएंगे ना, तो वो एक्टिव हो गए, बाकी सारे डोरमेंट हो गए. इट इज एक्जैक्टली द सेम विथ योर गुनास, आपके संस्कार जो हैं. तो अगर आप संस्कार आपके तामसिक के ज़्यादा बज रहे हैं, तो तामसिक संस्कार आपके बाहर आ जाएंगे. दे विल बी इन एक्शन. Correct? If you are doing that in Rajasic, then what happens? The Rajasic qualities will come up. So we have to be consciously aware of what are the sanskars in play in our life, and which are the ones who are taking us in raising the consciousness upwards. And you will find कि जो इमोशंस आपको नीचे लेके जाते हैं, कौन से इमोशंस होते हैं वैसे सोच के देखिए, विच विल ड्रॉ यू डाउन, आपको नीचे की तरफ खींचते हैं, आपके कॉन्शियसनेस को गिराते हैं. वो इमोशन, जस्ट इमोशंस की अगर हम बात करें, कौन से इमोशंस होंगे? वो ऑल द नेगेटिव इमोशंस, राइट? स्टार्टिंग फ्रॉम, यू कैन से, फियर, एंगर, हेट्रेड, एनवी, एंजाइटी, पैनिक, राग, द्वेष, अटैचमेंट्स, जो भी हम बोलते हैं, ये सब क्या है? दिस विल ऑटोमेटिकली, बाय द मेंशन ऑफ इट, यू नो दैट दिस इज गोइंग टू पुल यू डाउन. एंड इफ यू टॉक ऑफ लव, कंपैशन, contribution, forgiveness, gratitude, joy, yeah, forgiveness, compassion,
humility, all this is going to take you up. Just by listening to the emotions, you know that. So how much emotions are we experiencing in the negative zone, and how much emotions we are experiencing in the positive zone on daily basis? Just see that. कौन से 5 emotions आपके ज्यादातर आते रहते हैं, पॉजिटिव में और नेगेटिव में? तो नेगेटिव को कॉन्शियसली कम करना है, पॉजिटिव को कॉन्शियसली बढ़ाना है. दैट इज हाउ वी मूव इनटू द from one zone to the other. So I hope I made some sense. Aman ji? Absolutely, sir. Yes, sure, sir. Thank you so Yes. much. So Actually, conscious. Go ahead. so just 2 cents. So when I said that it is a progress or it is a stage, by that I was just thinking at the back of my mind कि क्या होता है कि जब एक एज है आपकी काम करने वाली, let's say till retirement you are totally in Rajsik because you have to take care of all the worldly liabilities and everything. But then age comes when you retire and then you say, okay, now I have worked. Now it's a time to focus more on the spiritual part of it, and then you kind of are at liberty to exercise your own sattvic things there. so so that is where I meant that is it with age or is it with time that you normally develop or normally progress from one stage to another? So okay, got it. So it's again a very good question. So if you understand, as per our scriptures, our whole lifespan of 100 years has been divided into 4 ashrams. You must have heard about it. Grihastha ashram, उससे पहले आपका Yeah. ब्रह्मचर्य है. So first 25 years is brahmacharya, 25 to 50 Then is grihasth, grahast, 50 to 75 is vanpras, and then it comes to sannyas. sannyas. 75, correct? But this is you can say a blueprint kind of a stuff. A person like Shankaracharya will be absolutely in the sattvic mode and at the age of 5. तो वो 5 में ही मोक्ष attain कर चुके हैं. Got my point? So it is a journey of the soul. But overall, you can say, in general, you can say yes. ब्रह्मचर्य के टाइम पे एक स्टूडेंट लाइफ है, जब पहले जैसे गुरुकुल में जाके पढ़ते थे तो धर्म की पूरी उनको ज्ञान मिलता था, और उनको आगे चल के गृहस्थ में एंजॉय करने के लिए जो स्किल्स चाहिए ताकि वो पैसा इकट्ठा कर सके. हाँ, विद्या मिलती थी उनको, स्किल्स मिलती थी, सो दैट लेटर ऑन दे कैन हेल्प इन फुलफिलिंग देयर जो काम और अर्थ है. काम और अर्थ जो है बेसिकली मीन्स डिजायर्स एंड वेल्थ. ये जरूरी है गृहस्थ आश्रम में, बिकॉज यू टू टेक केयर ऑफ ए फैमिली, राइट? तो उसके लिए जो नॉलेज चाहिए, जो स्किल्स चाहिए, वो सब आपको ब्रह्मचर्य में सीखना है. देन यू एंटर द गृहस्थ जीवन. गृहस्थ जीवन में you will find your own way how you are going to move towards vanapras. It's not hard and fast rule नहीं होता उसका. आप कभी भी vanapras की तरफ जा सकते हो. If you have a partner who is actually moving along with you in the higher consciousness, आप अपनी सात्विक साधना को पकड़िए और दोनों मिलके they can go ahead with that. It's not that you have to leave anything. गृहस्थ आश्रम छोड़ के जाना नहीं है, सिर्फ मेंटल लेवल पे डिटैचमेंट के साथ, पूरी कॉन्शियसनेस अवेयरनेस के साथ आपको आगे बढ़ना है. इवन जॉब करते समय आपने कहा कि राजसिक होना जरूरी है. नो, आई हैड डेवलप्ड दैट सात्विक लाइफस्टाइल व्हाइल वर्किंग. मैं सुबह अपना 2-3 घंटे में अपना पूरा सात्विक कंटेंट डाल लेता था, एंड मैं अगर बॉस से झगड़ा भी होता था तो मैं अपसेट नहीं होता था. राजसिक डील करते थे लेकिन उसमें अपसेट काफी कम हो गए थे, नेगेटिव इमोशंस बहुत कम हो गए थे. व्हाई? बिकॉज आई वाज प्रैक्टिसिंग सत्वा राइट इन द मॉर्निंग. गेट माय पॉइंट? Sure. हाँ, तो आपकी जर्नी के ऊपर है कितना इंक्लाइंड हैं आप टुवर्ड्स सत्वा. दैट विल शो हाउ मच level of consciousness you can achieve. Yes? Sure, sir. Thank you so much. Very good, Aman. That's a very good question that you have asked, and I hope I have made it clear for everybody. Yes. Who else would like to share? And meanwhile, welcome Vijay ji. You have come after. Yes. थोड़ा late आए हैं आज. Sir, while I mean, as a routine day, Vivek ji, yes. morning we start morning some actions in sattvic mode. फिर उसके बाद धीरे धीरे काम पे आते आते we get into राजसिक और तामसिक actions. And by the time we come back and settle after before sleep also, then we get back into the sattvic. Very good. So is that during the routine also, like we experience, is it okay, normal to go through these kind of experiences and actions? Yes. Yes. Throughout the day you can go through all the 3. Yes, absolutely right. And what in are fact, the when a soul and comes to avguns? the body, sorry, yeah, go ahead. Yeah, I mean, what are the sadguns and avguns within these 3 gunas?
Is there any classification of? You have to basically understand. See, तमस का क्वालिटी मैंने बता दिया था, आप शायद लेट आए हैं क्या? तमस की क्वालिटी बताई नहीं थी, सर, राजसिक की क्वालिटी जी बताई थी, सात्विक की क्वालिटी भी बताई थी, है ना? तो आपको ये देखना है कौन से नर्चर आप कर रहे हैं। आपके 100 गानों की प्लेलिस्ट है, कौन से गाने सुनना पसंद करते हैं आप? वैसे ही संस्कार से हैं आपके। कौन से संस्कार आप बार बार प्ले कर रहे हैं, वो ही आपके एक्शन में आएंगे। तो अगर आपके डर का संस्कार है तो आप हर जगह डरेंगे, आपका प्यार का संस्कार है तो हर जगह प्यार से आप डील करेंगे। डिपेंड्स ऑन व्हाट यू आर प्रैक्टिसिंग इन लाइफ। यस और नो? या तो आपका वही मैं चाह रहा हूं कि आप ये देखें कि आपकी लाइफ में, जैसे आपने कहा सुबह उठ के आपने पहले थोड़ा सा सत्वा का प्रैक्टिस कर लिया, 1 घंटा 2 घंटा आपने साधना की, राइट? उसके बाद आप Yep. ऑफिस चले गए या बिजनेस चले गए और वहाँ पे लोगों से इंटरेक्ट कर रहे हैं, तो बहस भी हो रही है, लड़ाई झगड़ा भी हो रहा है, टारगेट पूरे नहीं हो रहे, फ्रस्ट्रेशन भी हो रही है, थक भी गए, एनर्जी भी लो हो गई, शाम को घर वापस आए, राइट? करेक्ट सर। यप घर में फैमिली में भी थोड़ी तू तड़ाक हो रही है, जो भी हो रहा है, अपसेट हो गए, इरिटेटेड हो गए। उसके बाद रात को आप सोने से पहले थोड़ा आधा घंटा मेडिटेशन कर लिया आपने, एंड यू थिंक एवरीथिंग इज इन बैलेंस। बट ओवरऑल सी वेयर यू आर गोइंग। क्या सुबह 1 घंटा और रात को आधा घंटा ये करने से आपकी कॉन्शियसनेस आगे बढ़ रही है, या आप ज्यादा नेगेटिव हो रहे हैं? अगर हो रहे हैं तो सात्विक क्वालिटी इज नॉट सफिशिएंट टू बैलेंस द राजसिक एंड द तामसिक। इट इज नॉट गोइंग टू Okay. टेक यू अपवर्ड इन योर कॉन्शियसनेस। यस? ओके ओके अगर वो सफिशिएंट है, देन यू विल बी फुल ऑफ बबलिंग विद एनर्जी, फुल ऑफ जॉय। लड़ाई हो रही है, कोई बात नहीं, 5 मिनट बाद आप नॉर्मल हो गए एंड यू आर एब्सोल्युटली हैप्पी एंड जॉयफुल। शाम को घर आ रहे हो, हाउस इज फुल ऑफ जॉय। रात को आराम से मेडिटेशन कर रहे हो, 8 घंटे घोड़े बेच के सो रहे हो या 6 घंटे घोड़े बेच के सो रहे हो, दैट इज परफेक्ट। So your quality of sleep will tell you the quality of your life during the day. If you want to Okay. see what is the quality of your day, see how the quality of your life night में। रात को अच्छी नींद आ रही है, घोड़े बेच के सो रहे हो, दैट मीन्स आपका दिन की दिनचर्या जो है वो सही तरीके से जा रही है। लेकिन अगर रात को नाइटमेयर्स आ रहे हैं, बॉस और डील्स और ये सब चीजें रात को सपने में आ रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप अपने दिन में वो बैलेंस नहीं कर पा रहे। ठीक है? मैं ये तो जब से स्पिरिचुअलिटी सेशन शुरू किया तब से क्लॉक 4 बजे Good. So do मिडनाइट that. स्लीप If it is working for you, do that. That's what I wanted to actually all of you to look at. कि आप ये शेयर करिए, मैं सुबह 4 बजे उठता हूँ, क्या क्या करते हैं बताइए आप जरा, सबको थोड़ी नहीं सी नॉलेज मिलेगी। अपने आप नींद खुल जाती है सर। मैं ये नहीं कह रहा कि अपने आप नींद क्लॉक उस टाइम पे खुल जाती है। गुड। तो And 4 then बजे आप one- उठते हैं, फिर क्या करते हैं? कितने घंटे फिर साधना होती है? नहीं था पूरा नहीं, हाफ एन आवर 1 आवर जितना भी जैसा भी ओके हो सके उतना करके फिर देन गो बैक टू हैव अ नैप अगेन एंड देन गेट अप एंड फ्रेश अगेन। या That's fine. See, Yeah. the idea is that you should be aware, at least आपके अवेयरनेस में तो है कि सात्विक में कुछ करना है ना? जी जी Okay, good. So जी। वो just look शायद into your life and subconsciously see where you can consciously increase the sattvic time. That is the only one thing that I would like to leave you with. वो शायद सबकॉन्शियसली अपने आप सब हो जाता है, तभी बॉडी क्लॉक ड्यूरिंग दैट वी आवर्स it wakes me up and then And what time do you sleep? If you have to get up at 4 o'clock? I don't know, I sleep sometimes 12 o'clock also at sometimes, but automatically around 4:30 the clock चलो गुड, बढ़िया। starts. जस्ट लुक एट इट, बिकॉज आपको 6 घंटे से 8 घंटे की नींद भी पूरी करनी है, हाँ, वो भी जरूरी है, और सात्विक टाइम आपको निकालना है। तो ये आपका अपना रूटीन है, आप डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। आई एम नोबडी टू टेल यू दैट। सो you will find your own time, you will find your own routine, and that will help you move forward. Yeah, let's acknowledge Vivek ji. Very good. Yes, Leslie, go ahead. And Tarun, you wanted to share something, huh? Be ready after this. Yeah. Okay, my take slightly is different Hmm. to the gunas. मुझे लगता है कि सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि तुम चाहते क्या हो अपनी लाइफ में। आई मीन व्हाट इज योर डिजायर, व्हाट इज ड्राइविंग यू। So if whatever is driving you, automatically these gunas become your tools to be used. जैसे कि अगर सपोज करो मुझे लाइफ में सिर्फ मुक्ति पानी है, भगवान को प्राप्त करना है, then I will use all the tools and drop all the tools which are not working for me. So let's say
मैं रजस वाले गुनास को ऑटोमेटिकली छोड़ना शुरू करूंगा और ऑटोमेटिकली सात्विक गुनास पकड़ने शुरू करूंगा एंड टू अचीव माय गोल। अगर मेरा तामसिक गोल है सपोजिटली, तो मैं तामसिक को ही यूज करूंगा, सात्विक की तरफ मैं जाऊंगा ही नहीं। सो आई पर्सनली फील पहले गोल आता है, डिजायर आता है, फिर गुनाज आते हैं, ऑटोमेटिकली दे स्टार्ट प्लेइंग एंड यू स्टार्ट चूजिंग व्हाट इज रिक्वायर्ड। This is what I have a look at it. Okay, okay. That's fine. If that is your experience. So right now tell me what is your experience? आप कौन सा गोल चुने हो और क्या आपका एक्शन मैं प्लान अपनी किस लाइफ हिसाब के से? ही मैं अपने लाइफ के ही एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ कि मैंने अपनी जिस तरीके से टीनेज लाइफ, यंग लाइफ जैसे जैसे जी है, एंड जैसे जैसे मेरे गोल्स चेंज हुए, मेरे डिजायर्स चेंज हुए कि नहीं, दिस इज व्हाट आई वांट नाउ इन लाइफ, दिस इज व्हाट आई वांट इन लाइफ, दिस डजंट वर्क। एंड उस हिसाब से मैंने अपने गुनास पे भी काम करना शुरू किया है कि अगर मुझे मुक्ति की तरफ जाना है तो मैं वो सात्विक वाली सारी चीजें उठाना शुरू करूंगा, कर रहा हूं, जो मुझे अपने रास्ते में लाइक सपोर्ट कर रही है। तो जहां तक तामसिक वाला था, मैं आई स्टार्ट ड्रॉपिंग दोज बिकॉज इट्स नॉट फॉरवर्डिंग मी टू माय गोल ऑफ अचीविंग द हायर कॉन्शियसनेस। एंड मैं रजस वाला भी छोड़ना शुरू करूंगा बिकॉज समवेयर आई स्टार्ट सीइंग कि जहां सेल्फ सेंटर्डनेस है तो मैं उसी विशियस सर्कल में फंसा रहता हूं। पर मुझे अगर ऊपर उठना है तो मुझे सेल्फ सेंटर्डनेस हटानी है, मैं मुझे चाहिए ये छोड़ना है। देन इट्स ऑटोमेटिकली स्टार्ट्स बिल्डिंग टुवर्ड्स द सात्विक साइड। सो मुझे बार बार यही लगता है कि जिस तरीके से आपने कहा था कि इंटेंशन आपका क्रिएट करता है कि गुनास कैसे वर्क कर रहे हैं, दैट इज वेरी वेरी क्लियर फॉर मी कि आपका इंटेंशन क्या है, आपका गोल क्या अचीव करने का, ऑटोमेटिकली यू स्टार्ट यूजिंग दोस टूल्स। यस। सो जैसे कि एक डॉक्टर है, लेट्स से एक डॉक्टर, देयर वाज अ डॉक्टर स्टोरी दैट आई कैन शेयर राइट नाउ। एक डॉक्टर था कि उसको सिर्फ पैसे चाहिए थे, तो वो लोगों को विकलांग करता था फॉर द अदर पीपल एंड ताकि उनको उसको पैसा मिल सके। द सेकंड डॉक्टर वाज ही यूज्ड हिज knowledge to earn lots of money, so उसको चाहिए था, that is why he was practicing doctory. Yes. And then there were other doctors who wanted to kind of help the needy, and कि भाई मेरे को ये भगवान ने ऊपर से ये ज्ञान दिया है, why not I distribute it and give it to the other, because it kind of makes me more fulfilled, कह लो या जो भी कह लो. So the intention starts changing, the actions starts changing, the gunas we start using differently. Perfect. So that's my look at it. बहुत बढ़िया. Good understanding and good explanation also. So there is another way that I'm reminded, when somebody is following a tamasic lifestyle, it basically lowers down the consciousness में आप नीचे आ जाओगे. हाँ, राजसिक में हो तो कॉन्शियसनेस गिरेगी नहीं, लेकिन आप बॉन्डेज में फंस जाओगे. इट इज लॉट ऑफ अटैचमेंट्स. तो राजसिक में आप राजसिक तरीके से जी रहे हो, मतलब पैसा है, सब कुछ है, किसी का नुकसान नहीं कर रहे हो, सो कॉन्शियसनेस विल नॉट गो डाउन, बट इट इज नॉट गोइंग अप ऑल्सो. सो यू आर वेयर देयर, यू आर एग्जैक्टली देयर वेयर यू वर, बट लॉट ऑफ बॉन्डेजेस, तो आप ऊपर नहीं जा पाओगे. सात्विक कर्म जो हैं आपके, या सात्विक गुनास जो हैं, दे फ्री यू फ्रॉम द बॉन्डेजेस. तो ऊपर भी उठाते हैं और फ्री भी करते हैं. So that's why sattva is considered to be the you can say the most important or the most crucial in moving towards the spiritual journey, taking you higher to the higher and higher consciousness. तो चेतना के उच्चतम स्तर पे जाने के लिए सात्विक गुनास ही काम आते हैं. Yes. So that's another way we can understand. So beautifully explained by Leslie in his example कि जो डॉक्टर. सर एक एग्जांपल और है उंगली मार का. वो ठीक है, छोड़ दो, सबको मालूम है. हाँ, ट्रांसफॉर्मेशन की बात करें, वहाँ ट्रांसफॉर्मेशन की बात जैसे करें. वो चेंज होती है, जैसे वो उसकी इंटेंशन चेंज होती है, उसको उसकी लगता है इंटेंशन चेंज हुई बिकॉज ऑफ द गुरुज ग्रेस. आई गेट दैट, बट उसको फिर वो चाहिए था, दैट इज व्हाई ही स्टार्ट्स वर्किंग ऑन द सात्विक गुनास. Yes. So once he was transformed, he moved from tamasic and rajasic immediately into the sattvic, but the karmas followed him. He had to go through the tough phase of facing the karmas of whatever he had done,
But yes, he was committed that मेरे को आगे बढ़ना है, and that happened. Yes, absolutely right. But that's a story of transformation, magical transformation. Normally, people like us will go through the tedious journey of years and years of sadhana to move towards from tamas to rajas to sattva. So good. So good, Leslie. That your wonderful explanation. Let's acknowledge Leslie. Yes. Right. So we are coming to the close of the session. So further summarization by anybody, Amitji, Sanjeev, anything you want to add before we close down? Anybody who has any questions, please go ahead. Sanjeev sir. Go ahead, Amitji, aap boliye. And then we have to talk about something very important also. Yes. So let's close this discussion fast. Then we take another 5 minutes. Yes, I think Amitji. pretty good. So we can talk about the other stuff. Yeah. Okay. Okay. Good. Sanjeev, anything you want to add? Perfect. All right. So we have discussed the topic of the 3 gunas. Now, the homework or the assignment for everybody is look into your life. We should look into our life. See which gunas are predominant, जो हमको बहुत डोमिनेट कर रहे हैं, और क्या हमारी जर्नी आगे बढ़ रही है. नहीं बढ़ रही है तो बी कमिटेड फॉर द सात्विक गुनास टू बी included in your lifestyle. And the best time to do that is in the morning. I've always said that. But do all your actions, whatever you are doing, in remembrance of the sattvic gunas. That also helps. तो आप अपने रोजमर्रा की जिंदगी में जो काम कर रहे हैं वो करते रहिए, but in remembrance of the divine. Because sattva is all about divine. So invoking the divinity within and then doing the work exactly what you're doing. करते रहो. That will help you to remain in a space of divinity, and invoking divinity within will take you to the higher and higher levels of sattva and taking your consciousness higher. So that is the learning for today. Yes. So if everybody is okay with that, we will close that discussion. And another one important thing, which is very, very close to my heart, we are planning a spiritual retreat to Rishikesh. Yes, 13th, 14th, and 15th March. And there are many people here who have already registered and who are waiting for the retreat to happen. Yes, so I will take the opportunity to welcome or congratulate Vijay Bahadur ji, Tarun, Gurkirat ji, and or kaun hai, of course, Sanjeev, Amit ji, and there are many others who are not here. So Avdesh ji hain, then Dr. Manish hain, then Parveen ji hain, and there are many others who have registered for the program, and we are looking forward to the spiritual retreat. So this spiritual retreat, which is happening 13th, 14th, and 15th March, and the theme is Vedanta wisdom. But of course, it is not only Vedanta wisdom. We are going to look at different aspects of spirituality, how your spiritual journey can get a booster dose. So we will be talking of graphology, we will be talking of spiritual healing, and we will be talking of many other things, chakra meditation, and all this way is going to take your spiritual journey to the sattvic zone. So that's what we are talking of. कि तमस और रजस से निकल के सत्वा में आना है, तो वहाँ 3 दिन हम in the lap of the divine, we will be focusing on the sattvic qualities. So invoking the sattva qualities in you, sattvic gunas, which after coming back will give you a booster dose in your spiritual journey, and a lot of fun, a lot of bonding, and of course, a lot of gyan. So that is what the retreat is all about. And we are very soon going to close it. So people who are interested should get in touch with me. And if you're coming here for the first time, then you should be getting in touch with your host. And yes, and the seasoned seekers, Leslie and others who have to take a decision, so do take a decision fast and let us know if you are going to be part of the team. Then we can have a lot of fun. Anybody else who wants to share anything about the retreat? Sanjeev, Amit ji, anything? Tarun, Vijay ji, Gurkirat ji, those who have registered. What are you looking forward to? Anything you want to share with others? Please go ahead. Yeah. Sir, I've never been to Rishikesh, so I'm very excited to go to Rishikesh as well as for the retreat. So
it's like a totally new thing for me. Wonderful. Yeah. So the welcome to the team, and this is a curiosity that you need to carry with you. Yeah. So I'm very excited. I want to know more about Rishikesh, its history. Yes. I know what's I'm very excited and intrigued Perfect. by So this. whatever you are hungry for, you will get it. Yeah, yeah. जैसे बोलते हैं ना, वहाँ पे सब कुछ है, तो किस चीज के लिए आपका हंगर है, Okay, वो हंगर पूरा हो जाएगा. okay. But let us have the hunger for the divinity, for the divine, for invoking the 100%. divine in us, and to reach that level of self-realization, which will take us to a absolutely magical zone. So that is what we are looking at. Great. Let's welcome Gurkiru ji. Yes. No, Vijay ji, thank you. Tarun ji, anybody else who wants to share anything? Amit ji. Sanjeev wants to say something. Yes, Sanjeev. Go ahead. Who wants to share? Sanjeev wants to say something. No. Why aren't you saying anything? What do you want to know actually? And I everything don't is want to know anything, but why aren't you saying what you want to say? Okay. Amit has already said it. Starting में ही सीधा बोला वो. तुम क्यों नहीं बोल रहे हो? Not Yes. maybe publicly, but offline maybe. I'm waiting for you to say something, Baba. We are waiting for you to say yes. That is the question. okay. तो मैं Leslie आजा. अब हो That's गया, it. ये हो गया ना. इतना बोलना था, इतने अभी तक बोला नहीं था इसने. I was आजा waiting for him to say it. आजा join, come on join, आजा mother. It would be Okay, great. done. I'm joining. क्या बात है? Wonderful. So let's welcome Leslie also. Nice, Yes. nice. And we know, वो बोलते हैं ना, आखिर तुम्हें आना होगा, थोड़ी देर लगेगी, वही हाल है उसका. तो आना तो था ही. After all what we had enjoyed in the Pratibim camp, that was last to last year. So yes, so we are all looking forward to having great What fun. happened in the Pratimam camp That's a where camp it that was we had organized? done 2 years back, and we had a lot of fun there. And it was a 3-day Okay. camp again. So he was Where part it of it, was and yeah, conducted? it was in Delhi Which? only. It was in Delhi. It Oh, was a organization. It was based on. okay. It's all about yogic pranayam. So it was a great session conducted by Okay. Mr. Praveen sir. So we Okay. were all participants there, and we had a lot of fun. So we were trying to recreate that in Rishikesh again. So yes, so Oh, he's part of beautiful. it. Very nice. Very nice. Wonderful. Okay, great. Anybody else who wants to share anything? So I think only 2 people in this online session are not coming as of now. Viralji, I don't know who is this person, but Aman and Vivek, these 2 brothers, you should also now get encouraged. Let me tell you, I think, so I've been to Rishikesh maybe about 30 times, 30, 40 times. I have lived in various ashrams in Rishikesh, lived for weeks, maybe 40 days once. I had met very different people, attended various retreats, where I did not know anybody like this. For example, this will be my first instance where such a big group will go of the spiritual community that I belong to, where everybody is at some spiritual coordinate, irrespective of high or low, whatever. There'll be so much relevant stuff to learn. There is a relevant in the sense, for example, I attended some sessions called एक था Art of Dying, एक था Rebirthing, और इस तरह से कई सारे थे. एंड ड्रॉप इन योगा क्लासेस बहुत सारी किया, अलग अलग लोग मिले इंडिया के बाहर के. बट दिस विल बी वेरी डिफरेंट, एंड स्टिल आई एम सेइंग दैट आई एम वेरी एक्साइटेड फॉर दिस डिस्पाइट दैट आई बीन देयर अबाउट 30-40 times, attended dozens of such retreats and sessions in this valley, but still I'm very excited. So imagine Amit bhai, bound by the Rajasic duty at office. तो देखो, थोड़ा सा मैनिफेस्ट कर लो, थोड़ा सा ऐसा कुछ चालू करो, भगवान को फोन कर दो, ऐसा है कि 13 वाले फ्राइडे को कुछ ऐसा हो जाए कि मेरी जरूरत ना हो और मेरे को सम्मा छुट्टी मिल जाए, and I should be if you're physically in Delhi and if you're not traveling already, or maybe किसी क्लाइंट के जाना, वो डील वैसे बन जाए और शायद हमारे साथ. I might have to travel actually. I'm tempted to share something here. There was a discussion of the same discussion कि भाई सत्वा का इतना काम करने के लिए राजसिक काम का क्या करें. So you have to understand materialistic goals जो भी होते हैं ना, जितने भी आप अचीव कर लो, जितने भी डिजायर्स पूरी कर लो, it is all like adding zeros. Zeros ऐड करते जाओ, zeros ऐड करते जाओ,
In fact, I लेकिन wanted to be hold on, a part of this. Yeah, get the full joke first. हाँ, तो वो कहते हैं कि ये सारे zeros हैं, zeros add करते जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा. The moment you add one sattvic gunas along with it, it is like putting a one before that. Now you keep on adding zeros, it makes a lot of sense, right? तो materialistic joy और materialistic success के लिए भी उसमें थोड़ा सा spiritual angle डालना जरूरी है, तभी 100 का 1000 और 1000 का 1 लाख और 1 करोड़ बनेगा. हाँ, तो तड़का देना स्पिरिचुअलिटी का बहुत जरूरी है, सो दैट यू एक्चुअली एंजॉय फुलफिलमेंट इन योर लाइफ. अदरवाइज डिजायर्स पूरी कर लिए, देखिए हम सारे 40 साल 50 साल के हो चुके हैं, डिजायर्स हमने अपनी लाइफ में पूरी की हैं, बहुत करी हैं. डिजायर्स खत्म हो गई क्या? नहीं हुई. डिजायर्स को पूरा करने से डिजायर्स कभी खत्म नहीं होंगी. गेट माय पॉइंट? तो मेटेरियलिस्टिक गोल्स को अचीव करने से फुलफिलमेंट नहीं मिलने वाली है. द रिचेस्ट मैन इन ऑन दिस प्लैनेट अर्थ हैज आल्सो सेड दैट, राइट? कि फुलफिल, जिन्होंने बोला है कि पैसे से फुलफिलमेंट नहीं मिलती, पैसे से ब्लिस नहीं मिलता, दे आर एब्सोल्युटली राइट. सो वी हैव टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग देयर. जीरोस तो बहुत सारे ऐड हो गए, वन नहीं लगा सामने. जिस दिन वन लग जाएगा, फुलफिलमेंट आ जाएगी, ब्लिस आ जाएगा, एंड यू विल एक्चुअली लिव ए कंप्लीट लाइफ. एंड देन यू कैन डिक्लेयर, I am whole, I am complete, I am perfect, and I am divine. So everything will happen. That is why sattvic gunas are so important to balance the rajasic and tamasic. Yes. So I was tempted to share this when Aman said that. So yes, so Aman, food for thought for you. आप लोग बीच बीच में वो जैसे होना कि दिन से सात्विक शुरू करके फिर राजसिक तामसिक, मतलब डे रूटीन में, ऐसे लाइफ के रूटीन में भी आप लोग ब्रह्मचर्य, फिर गृहस्थ, फिर बैराग, वानप्रस्थ, और ये बीच ये जो जोन है आपका रिट्रीट वाला, ये वानप्रस्थ और संन्यास वाले जोन में थोड़े दिन के लिए जाके वापस आ जाओगे. क्यों? सारे गृहस्थ में है, जो जा रहे हैं सारे गृहस्थ में. किसने कहा कि वानप्रस्थ? हाँ, तो मैं कह तो रहा हूँ सर, थोड़ी देर के लिए वानप्रस्थ, उसमें वो ब्रेक मिल जाता है ना उनको, वो ब्रेक लेके जाएंगे. वानप्रस्थ नहीं हो रहा है. Vanprastha is when you leave the house and you go away to the Vanprastha actually means going to the jungle, leaving the palace and leaving the home. We are not doing that, right? ये सिर्फ हम तमस और रजस को बैलेंस करने के लिए सत्वा का कंटेंट बढ़ा रहे हैं. That's all this. So the retreat is always about the sattvic gunas, and that is what is important at any stage of life. In fact, the youngest participant could be 4 years old or 5 years old child, who is joining us. So that is more fun. So you never know. They absorb the energy. So कोई भी किसी भी रेंज पे आ सकता है. तो 70 years 80 years के लोग भी होंगे, 5 साल के भी होंगे, and general age is of course 40s 50s 60s whatever. Yeah. All right, great. Anybody else who has any kind of question? Yes, Sanjeev, go ahead. I would like to say to Vivek, actually वहाँ पे ना वानप्रस्थ के लिए नहीं जा रहे हैं, हम ब्रह्मचर्य को बेटर बनाने, सॉरी, हम अपने गृहस्थ आश्रम को बेटर बनाने जा रहे हैं. Yes. So you can enjoy some brahmacharya out there, living your family here, and then you come back, you have a better grihast life. That's great. Wonderful. All right. Anybody else who wants to share anything? Otherwise, it is 10 minutes over time. So we will close the session now. But then invitation from my side, anybody and everybody, share it with your people in your life, and anybody who is interested, please ask them to get in touch with me. We still have a couple of days before we close the registrations, and finalize it by Thursday or Friday. We will be closing it. So if anybody is interested, get in touch with me. We will close that. And let me assure you, it is going to be... Yes? Thursday is tomorrow. Yeah, Thursday or Friday we will have to close because we have to make the arrangements there. Tomorrow or day after tomorrow is the last date, right? Right. Yeah, by Friday you can take it. Okay. Yes. All right. So with this, we come to the end of the session. So thank you very much for your participation. I hope this was valuable to you. So thank you so much. Enjoy your life, enjoy your day, enjoy your week, and we come back again next week. Till then, Aham Brahmasmi. Enjoy, take care, good night. Thank you. Thank you. Bye-bye. Night.